थैंक यू। इतना गर्म की 2 बूंदी काफी है। प्रेम को भी देता है। बाल ठीक करने के लिए बोल रहे हैं सर, पीछे का ये सर यहाँ से थोड़ा सा कंघी बोला तो सर की रखेंगे, लेकिन हमको भी लगा कि आज चलते हैं लेके, लेकिन फिर भूल गए हम भी। तो कैफे लगा लेते सर, बाल का ठीक है। नहीं, कैप वो वाला है, वो ठीक नहीं लगेगा, ऊटी वाला है, क्या हो जाना चाहिए। वो बाल खड़ा खड़ा है ना, वो उसके लिए बोल रहे हैं। ठंड में सब बाल खड़ा हो गया। देखिए ठीक है। स्टार्ट करिए सर। Good afternoon, everyone. Today I am going to discuss the paper MMPF 003 Management Control System. I have already discussed in previous class what are the structure of course MMPF 003. So you know that there are 4 blocks in this course. Block 1, management control concepts and context. Block 2, management control structure. Block 3, management control process. And block 4, management control in some special organizations. So I have already discussed in previous class unit 1, management control system and introduction. So today I am going to discuss unit 2, that is strategies and management control. So the objective of these units are to first concept of a strategy, like what you mean by a strategy, what are the features of a strategy, characteristics of a strategy. Second one is nature of corporate and business unit a strategy. Corporate strategy, business unit strategy, there are different types of a strategy. So third one is interlinkage and interface between a strategy and management control. So this unit has some structure
that are introduction, mission and objective, concept of a strategy planning, a strategy and core competence, business unit a strategy, corporate level a strategy, General Electric planning model, G model, improving competitive advantage, a strategy and management control interface, radical performance improvement and management control, and goal congruence. So these are the structure of this unit. So now I am going to discuss introductory part of this unit. So you can see on the screen in the control hierarchy, the focus is on a strategy formulation, management control, and task control. A strategy indicates the general direction in which an organization is moving to fulfill its mission, goals, and objective. Hence, understanding the nature of competitive strategy is very important. There are a variety of models and frameworks which helps us in understanding the concept of a strategy and its planning. They also help us in the formulation of a strategy. So a strategy is very important tools for a business to tackle the competition in the environment, in the business environment. अगर आपको बिजनेस कॉम्पिटिटिव लीडर बनना है तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा और सक्सेस होना होगा. बिकॉज मार्केट में कंपटीशन बहुत ही हाई है, तो आप स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही आप उन कंपटीशन को फेस कर पाएंगे, उनसे टैकल कर पाएंगे, उनसे लीड ले सकते हैं आप. So, what do you mean by mission and objective, goal, objective, mission, vision? Vision is a long term objective. Vision means कि आपको क्या बनना है, ये डिस्कस करना होता है ना, कि आपको कहां तक जाना है और उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा. ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपके पास गोल होने चाहिए, छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए, ताकि आप उनको अचीव करके आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए और अल्टीमेटली आप अपने मिशन और विजन को भी वहां पे अचीव कर पाए आप. सो goals are defined as broad statements of what the organization wants to achieve in the long run permanently. And objectives are defined as a specific statement of aims, the achievement of which is contemplated within a specified time. So this is a basic difference between goals and objective. It is very clear on the screen on the statement. So many times these terms are also used interchangeably. However, both are subsumed under the term mission, which is indicative of the strategic intent and the strategic direction of the organization. So the mission is articulated based on the vision of the founders of the chief executive. I have already discussed just a few minutes कि सबसे बड़ा जो होगा वो विजन होगा, विजन के नीचे मिशन होगा, मिशन को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्टिव बनते हैं और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स हमको फॉर्म करने पड़ते हैं, प्रिपेयर करने पड़ते हैं. So the mission is achieved through a properly formulated strategy and action plan with an appropriately inbuilt mid-course correction system. Mission, vision, and action indicate the interactive relationship between a strategy and management control. So concept of a strategy. So what do you mean by a strategy?
So, a strategy is an action that managers take to attain one or more of the organizational goals. A strategy can also be defined as a general direction set for the company and its various components to achieve a desired state in the future. A strategy results from the detailed strategy planning process. A strategy is all about integrating organizational activities and utilizing and allocating the scarce resources within the organizational environment so as to meet the present objectives. As we know that कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेस होते हैं, वो हम सोसाइटी से लेते हैं, वो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो अल्टीमेटली आपको एनवायरनमेंट को ही बेनिफिटेड करना होगा। और ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो अस्कार्स लेवल पे रहती हैं, स्कार्सिटी उनकी रहती है, कमी रहती है। अभी हम कोल की बात करें तो कोल धीरे धीरे जितना यूटिलाइज होता गया उसका माइंस उतना ही कम होता चला गया। तो कोई भी जो रिसोर्सेस होते हैं वो नेचर में लिमिटेड होते हैं। अब स्ट्रैटेजी ये रखना है, स्ट्रैटेजी ये आपको बताती है कि उस स्कार्स रिसोर्सेस से आप किस तरह से मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाएंगे। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो स्कार्स रिसोर्सेज से आप मैक्सिमम प्रोडक्शन को अचीव नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली वो स्कार्स जो भी रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएगी और उसका आप ठीक तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे। So concept of a strategy, while planning a strategy, it is essential to consider that decisions are not taken in a vacuum and that any act taken by a firm is likely to be met by a reaction from those affected, competitors, customers, employees, or suppliers. So it is also called a stakeholder. Those persons which are directly or indirectly connected with the company. So a strategy can also be defined as knowledge of the goals, the uncertainty of events, and the need to take into consideration the likely or actual behavior of others. So a strategy is the blueprint of decisions in an organization that shows its objectives and goals, reduces the key policies and plans for achieving these goals, and defines the business the company is to carry on, the type of economic and human organization it wants to be, and the contribution it plans to make to its shareholders, customers, and society at large. So, a strategy is very useful tools or techniques for a business concern, for an organization to success the business. Features of a strategy. What are the features of a strategy? So, a strategy is significant because it is not possible to foresee the future. Without a perfect foresight, the firms must be ready to deal with the uncertain events which constitute the business environment. So, a strategy deals with long term development rather than routine operations. That is, it deals with probability of innovations or new products, new methods of production, or new markets to be developed in future.
सो स्ट्रैटेजी ऐसे ही नहीं बोला गया है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होगी तो आप सक्सेस होंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी जनरल वर्किंग से बिल्कुल अलग है। जनरल वर्किंग कॉन्सेप्ट जो आप डे टू डे जो आप प्लानिंग करते हैं, बिल्कुल उससे स्ट्रैटेजी अलग है। स्ट्रैटेजी मीन्स कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल कैपेसिटी कितना आगे तक रहेगा, ये डिफाइन करता है स्ट्रैटेजी। लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ इनोवेशन, आपके एरिया में क्या रिसर्च हो सकता है, क्या इनोवेशन हो सकता है, इनोवेशन इनोवेटिव आइडियाज डेवलप हो सकते हैं, ये आपके फ्यूचर को ब्राइट करेगा। और न्यू प्रोडक्ट्स, हमेशा सिंगल प्रोडक्ट पे या एक ही जैसे प्रोडक्ट से कंज्यूमर उब जाते हैं, तो वहां पे आपको देखना होगा कि न्यू प्रोडक्ट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हम न्यू प्रोडक्ट किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक बेटर स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं। सो न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का जो ओल्ड मेथड है जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है, तो आप कुछ प्रोडक्शन की ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढे जिससे कि वो टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाए, प्रोडक्शन ज्यादा हो, ताकि आप मार्केट सर्वाइवल और मार्केट कॉम्पिटिटर्स में आगे रहें। So a strategy is created to take into account the probable behavior of customers and competitors. A strategy dealing with employees will predict the employees' behavior. So next one is SWOT analysis. You know very well about SWOT analysis because every business analyze SWOT analysis. SWOT, it is abbreviation for S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunity, and T stands for threats. So that is SWOT analysis. SWOT analysis इसमें आप देखेंगे कि जो इंटरनल फैक्टर है, दो यहाँ पे इंटरनल फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, लाइक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये इंटरनल फैक्टर इसलिए है क्योंकि एक बिजनेस के अंदर ओन स्ट्रेंथ होता है, अपना स्ट्रेंथ होता है, और उसकी अपनी कमजोरियां भी होती हैं, वीकनेसेस भी होती हैं। लेकिन एक्सटर्नल में आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, यानी ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो एक्सटर्नल है। अपॉर्चुनिटी आपको बाहर से मिलेगा और थ्रेट्स भी आपको बाहर से मिलेगा। तो अगर कोई थ्रेट्स आता है तो अपने स्ट्रेंथ के साथ उसको मैच कीजिए, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो अपने स्ट्रेंथ के साथ उसे मैच करके उसका बेनिफिट उठाइए। सो देयर आर 4 response of SWOT analysis. So first one is matching strengths with environmental opportunities. This calls for an aggressive approach to a strategy because the company has many strengths and many opportunities. If these opportunities are not tapped, they would become missed opportunities. सो आप अपने स्ट्रेंथ को एनवायरनमेंट के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप रिसीव कीजिए, उसको आप एडॉप्ट करके उसका बेनिफिट उठाइए। अगर आपकी कंपनी में स्ट्रेंथ नहीं है, उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप मार्केट अपॉर्चुनिटी को लैप्स कर सकते हैं, आप उसे छोड़ सकते हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह होगा, काफी ज्यादा लॉस हो सकता है उससे। Second response is coping with threats from the position of a strength. तो बाहर से जो भी थ्रेट्स आते हैं, जो भी डर पैदा करने वाले फैक्टर्स हैं, उनको आप अपने स्ट्रेंथ के साथ मैच करके रखिए ताकि आपकी सर्वाइवल कैपेसिटी अच्छी हो सके, आपकी ऑर्गेनाइजेशन
अच्छे तरीके से स्टैंड कर सके एनवायरमेंट। So when the company had several strengths, but it faces several threats, the response strategy is one of diversification. Through diversification, it can minimize the adverse impact of threats. So, what do you mean by diversification? डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि आप अपने रिस्क को डिफरेंट पोर्टफोलियो के थ्रू आपने रिस्क को डाइवर्सिफाइड कर दिया, अलग अलग तरीके से उसे मोड़ दिया है, अलग अलग डायरेक्शन में उन्हें भेज दिया है, जिससे वो कुछ हद तक रिड्यूस हो सकते हैं। थ्रेट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, थ्रेट से आप लड़ सकते हैं अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। सो third response, the market offer opportunities, but the company had several weaknesses. थर्ड रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं कि मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके फर्म का वीकनेसेस जो है काफी ज्यादा है, जिसके कारण आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर पा रहे हैं। आप मार्केट अपॉर्चुनिटी को ले नहीं पा रहे हैं और वहां पे आपको ह्यूज लॉस होने की चांसेस रहेगी, अपॉर्चुनिटी लैप्स करने की चांसेस रहेगी। सो द मार्केट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज, but the company had several weaknesses. In such a situation, the company should be put into a turnaround gear. It should focus on overcoming its weaknesses so that it can tap the opportunity to its advantage. So response 4 is there are many threats and the company had several weaknesses. बहुत सारे थ्रेट्स आपकी कंपनी के ऊपर है, बहुत सारा भय बना हुआ है, बिजनेस बंद होने का भय है, गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन ले सकती है, लीगल एक्शन ले सकती है, या कोई इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा आ रहा है जो आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल नहीं है। तो बहुत सारी ऐसे थ्रेट्स हैं जो आपके ऊपर आ रहा है और आपकी कंपनी में बहुत सारे वीकनेसेस भी हैं। तो इस कंडीशन में आपकी कंपनी हो सकता है कोलैप्स कर जाएगा, लिक्विडेशन स्टेज में आपका चला जाएगा। So there are many threats and the company had several weaknesses. This is the case of losing battle. आप युद्ध हार जाएंगे। The company can focus on protecting its territory through a defensive approach. आप सिर्फ अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को बचाने की कोशिश करेंगे, जो आपका टेरिटरी है उसको सिर्फ आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। Unless a strategy surgery is done, the company will have to divert and say quits to the business. अगर वहां पे भी सिचुएशन ठीक नहीं है तो आपको क्विट करना होगा, बिजनेस से बाहर निकलना होगा और आपका एग्जिस्टेंस वहां पे खत्म हो जाएगा। सो शॉर्ट एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, इसको आप इस फिगर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, शो अ स्ट्रेंथ, W weaknesses, opportunities and threats. What are your personal internal strength that you can lead as to help to achieve your goals? Weaknesses, what are your personal internal weaknesses that you need to work on to achieve your goals? What external opportunities such as resources, people or training can you take advantage of to help you to achieve your goals? And what external threats such as upcoming threats, upcoming hurdles, etc., and mitigate to ensure you reach your goals? So SWOT analysis is very important analysis for a business. So now I'm going to discuss the topic of strategic planning. What is strategic planning? What do you mean by a strategic planning?
A strategic planning is the art of creating a specific business a strategy, implementing them, and evaluating the results of executing the plan in regard to a company's overall long term goals or desires. It is a concept that focuses on integrating various departments such as accounting and finance, marketing and human resource, etc., within a company to accomplish its strategic goals. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है किसी कंपनी के अंदर में. अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आप स्ट्रैटेजी को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, उस पर कंट्रोल कर सकें और उसका जो भी आउटपुट आपने एस्टिमेटेड किया था वो एस्टिमेटेड आउटपुट आपको अचीव हो सके, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टेक्निक सस्टेन. आप स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाते समय किन किन स्टेप्स को लेंगे, किस तरह से आप उसको क्रिएट करेंगे, क्या उसकी टेक्निक्स है. सो फर्स्ट इज डिटरमाइन योर स्ट्रैटेजिक पोजीशन. दिस प्रैक्टिस सेगमेंट सेट्स द डिग्री फॉर ऑल वर्क गोइंग अहेड. You want to realize where you are to determine where you need to go and how you will get there. तो सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेटजिक पोजीशन को डिटरमाइन करना होगा. आप कहां जाना चाहते हैं, आप क्या रियलाइज करना चाहते हैं और वो कहां से अचीव आप कर पाएंगे और किस तरह से आप वहां तक पहुंच पाएंगे. ये सारी बातें आपको फर्स्ट स्टेप में क्लियर कर लेनी होगी. एंड द सेकेंड स्टेप इज प्रायोरिटाइज ऑब्जेक्टिव्स. As soon as you have got recognized your current function inside the market, it's time to determine targets to help you acquire your dreams. Your objectives must be consistent with your company's undertaking and visions. Prioritize your goals with the aid of asking essential questions inclusive of the first question is which of these initiatives will have the greatest effect on the subject of accomplishing our agency challenge and enhancing our function inside the market. Second, what a style of impact are maximum vital? How will the competitors react? किस तरह से आपके competitors react करेंगे वो आपको समझने की जरूरत है. Which initiative require maximum attention? आप कौन से एक्शन प्लान लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, आपके स्ट्रेटजी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा वो आपको देखना है. What we need to do to perform our objectives. How can we measure our progress and decide whether or not we executed our objectives? So these are prioritized objective is very important topic. So किस तरह से आप अपने ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटाइज करते हैं, रैंकिंग करते हैं कि आपको सबसे पहले क्या अचीव होना चाहिए, क्या आपको मिलना चाहिए. दैट इज द मैटर. So third one is design a plan. This step calls for determining the techniques important to reach your targets and designating a timeline and clean conversation of obligations. A strategy mapping is an effective device to visualize your entire plan, operating from the top down
Method maps make it easy to view commercial enterprise approach and discover gaps for improvement. सो आप किस तरह से डिजाइन करते हैं अपने प्लान को, ये काफी मैटर करता है। क्योंकि जब भी आप स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले प्लान को आपको डिजाइन करना होगा कि किस तरह से आप, और इसमें सबसे जो बेटर टेक्निक है वो स्ट्रैटेजी मैपिंग की टेक्निक है, जिसके थ्रू आप एक प्लान को डिजाइन कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज फोर्थ स्टेप, एग्जीक्यूट एंड मैनेज द प्लान। जब आपने प्लान को डिजाइन कर लिया है, प्लान को पूरी तरीके से बना लिया है, तो अब उसको एग्जीक्यूट करना है और मैनेज करना है। एग्जीक्यूट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। आपने जो भी प्लानिंग किया होगा उसके अकॉर्डिंग आप काम करना चालू कर दीजिए, और जो भी आउटपुट आपने एस्टिमेटेड आउटपुट रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज भी करना चालू करेंगे। अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो एस्टिमेटेड आउटपुट आपको अचीव नहीं हो पाएगा, या आप जिसके लिए स्ट्रेटजी बनाए हैं, फॉर्मुलेट किए हैं, वो अचीव नहीं हो पाएगा। So as soon as you have got the plan, you are geared up to put it in force it, for which speak the plan to the company with the aid of sharing applicable documentation. Then the actual work starts and set up regular reviews with individual and their superiors and determine check-in points to ensure you are on track. आप रिव्यू ले सकते हैं एग्जीक्यूट करने के पहले। एग्जीक्यूशन में आप रिव्यू लीजिए, अपने सीनियर का रिव्यू लीजिए, अपने सुपरवाइजर का लीजिए रिव्यू वहां पे, कि आपने जो प्लान को जो डिजाइन किया है वो कहाँ तक सक्सेस है, और क्या वो ट्रैक पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसा वो प्री डिफाइंड ट्रैक था उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना होगा आपको। नेक्स्ट स्टेप इज रिव्यू एंड रिवाइज द प्लान। अगर एस्टिमेटेड आपका जो आउटपुट था उसके अकॉर्डिंग आपको अगर अचीवमेंट मिल चुका है, अचीव आपने कर लिया है एस्टिमेटेड गोल को, तो आपको वहां रिव्यू करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। बट अगर सिचुएशन एडवर्स होता है, एडवर्स सिचुएशन दैट मींस निगेटिव सिचुएशन, आपने जो प्लान किया था, आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो फेल हो चुका है, तो वहां पे आपको रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट होगी। रिव्यू करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारा डिमेरिट रहा, कहाँ पे वो गैप रहा जिसके कारण हम अचीव नहीं कर पाए, और फिर से प्लान को आपको रिवाइज करना होगा, फिर से आपको कहीं पे उसमें कुछ ऐड करना होगा, किसी को वहां से रिमूव करना होगा। सो द वेरी लास्ट स्टेप of the strategic plan is to study and revise that allows you to re-evaluate your priorities and path correct based on past success or failures. On an annual basis, it is important to re-evaluate your priorities and a strategic position to ensure that you live on target for achievement ultimately. Tune your development using balanced scorecards to provide complete expertise on your commercial enterprises performance and execute a strategic dreams. सो आप जो अचीव करना चाहते हैं और अचीव नहीं हो पाया है, तो आप रिव्यू कीजिए, कहाँ पे डिमेरिट रहा, कहाँ पे कमी रहा, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, और फिर से प्लान को रिवाइज करके फिर से उसको उसे अचीव करने की कोशिश कीजिए। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑन द स्क्रीन इज स्ट्रैटेजिक एंड कोर कंपिटेंसीज।
For any organization, its core competency refers to the capabilities, knowledge, skills, and resources that constitute its defining strength. A company's core competency is distinct and therefore not easily replicated by other organizations, whether there are existing competitors or new entrants into its markets. इसके लिए स्ट्रैटेजी आप समझ चुके हैं और कोर कंपटेंसीज मीन समझिए आप में बारीकी कितनी है, आप कितने क्लेवर है, कितने चालाक है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे न्यू एंट्रेंट्स आएंगे, न्यू कॉम्पिटिटर्स पैदा होते हैं। तो उन सब से आप कैसे टैकल करेंगे, आप अपने बिजनेस को किस तरह से सर्वाइवल कैपेसिटी से आगे ले जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कोर कंपटेंसीज कितनी है, आप में कितनी क्लेवरनेस है, ये कोर कंपटेंसीज को बताता है। An organization's core competencies, sometimes called core capabilities or distinctive competencies, explain what it can do better than any other company and why. These capabilities provide a strong foundation from which the business will deliver value to customers and stakeholders, seize new opportunities, and grow. They set the company apart from its peers and help create a sustained competitive advantage in its industry or sector. A company can have one or more organization wide core competencies, such as the following: प्रोडक्ट क्वालिटी, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, ये आपके कोर कंपिटेंसीज को स्ट्रेंथ देगी। जितनी अच्छी क्वालिटी है उतना अच्छा आपका कोर कंपिटेंसीज डेवलप होगा। वाइंग पावर, वाइंग पावर किस तरह की है, वो भी आपके कोर कंपिटेंसीज को स्ट्रेंथ देगा। कस्टमर सेंट्रिक, ओमनी चैनल सपोर्ट, डिजाइन और इनोवेशन कैपेबिलिटीज, sales and marketing ecosystem, automated workflows and processes, and science. These all factors are directly related to core competencies of a company. Each competencies is a positive characteristics that contributes to the company's unique positioning. Having and using them matters because they can make it quite difficult for competitors to exactly duplicate the company's offering or replicate its success. This is why identifying core competencies is a crucial step in a strategic planning. So you can see on the screen a strategy and core competency. There are three areas for core competencies: interpersonal skills, business skills, personal skills. So interpersonal skills include leadership, motivator, negotiator, consequence builder, and team builder. Business skills include accounting, economics, compliance, legal, technology, marketing, statistics. Personal skill includes motivated, innovative, experienced, communicative, and consultative. So
डिफरेंट एरिया में आप देख रहे हैं कि कितने स्किल्स की जरूरत होती है जो आपके कोर कंपिटेंसीज को इंक्रीज करेगी, इनहेंस करेगी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी. So what do you mean by corporate level strategy and what includes corporate level strategy? So a corporate level strategy is a multi-year and multi-tiered plan that outlines an organization's business goals. This strategy defines the organization's direction in the following years, such as expanding the business, increasing the profit margin, or wrapping up business from a certain market segment. तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में आप देखेंगे कि किस तरह से कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटजी को क्रिएट किया जाता है. लाइक इसमें स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी आप देखेंगे कि कंपनी सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी पोजीशन को बचाए रखना चाहती है, मींस कि ऑलरेडी वो स्टेबल हो चुकी है और उस पोजीशन को वो उस पोजीशन पे वो बने रहना चाहती है. दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी. नेक्स्ट वन इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी. अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है उसका, तो वहां पे वो सबसे पहले कुछ एम्प्लॉइज का जो फाइनेंशियल बेनिफिट है उसको वो रोकना चालू कर देता है. लाइक बोनस देना बंद कर देगा, परक्यूजिट्स देना बंद कर देगा, अलाउंस देना बंद कर देगा. उसके बाद भी अगर पोजीशन ठीक नहीं रहा तो कुछ एम्प्लॉइज को निकालना चालू करता है. दैट इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉइज. क्योंकि जो उसकी सैलरी है, जो सैलरी पे करने की कैपेसिटी है, वो उतनी नहीं रह जाती है बिकॉज लैक ऑफ प्रॉफिट. सो वहां पे एम्प्लॉइज को रिट्रेंच करना चालू कर देता है, हटाना चालू कर देता है. और अगर उसके बावजूद भी अगर कंपनी लॉस में ही जा रही है तो वहां पे फिर लिक्विडेशन स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, जिसमें कंपनी के सारे एसेट्स को बेच दिया जाता है और बेचने के बाद जहां से भी आपने कैपिटल को लिया होगा उसको उसको रिटर्न कर दिया जाता है. सो corporate level strategy includes different models like BCG, Boston Consultancy Group model. It is very important model for any type of business. Boston Consultancy Group matrix is a four sealed matrix, a 2x2 matrix developed by BCG, Boston Consultancy Group, USA. It is the most renowned corporate portfolio analysis tool. It provides a graphic representation for an organization to examine different businesses in its portfolio on the basis of their related market share and industry growth rates. So it is a two-dimensional analysis on management of SBUs, strategic business units. In other words, it is a comparative analysis of business potential and the evaluation of environment. According to this matrix, business could be classified as high or low according to their industry growth rate and relative market share. That means आप एक एक्सिस पे इंडस्ट्री ग्रोथ रेट रखते हैं और एक एक्सिस पे रिलेटिव मार्केट शेयर रखते हैं.
और वहां पे हम देखते हैं कि किस तरह का पोजीशन बनता है। आगे आप फिगर में देखेंगे कि एक काउ है, क्वेश्चन मार्क्स है, डॉग है और स्टार है। ये चार पोजीशन बनते हैं बीसीजी मैट्रिक्स में, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप मैट्रिक्स में। So relative market share is SBU sales, strategic business unit sales this year, leading competitors sales this year. Market growth rate क्या है? Industry sales this year minus industry sales last year. तो इन दोनों का difference, it is the difference between industry sales this year and industry sales last year. The analysis requires that both measures be calculated for each SBU. The dimension of business strength, relative market share will measure comparative advantage indicated by market dominance. The key theory underlying this is existence of an experience curve and that market share is achieved due to overall cost leadership. So the BCG matrix has four cells, as I discussed just a few minutes. With the horizontal axis representing relative market share and the vertical axis denoting market growth rate. The midpoint of relative market share is set at 1.0 point. If all the SBUs are in the same industry, the average growth rate of the industry is used. While if all the SBUs are located in the different industries, then the midpoint is set at the growth rate for the economy. So you can see on the screen BCG model figure. You can see horizontally put the relative market share high, low, and vertically put market growth rate low and high. So I explain this topic according to this figure. Market growth rate high and relative market share high. That position is called a stars. Market growth rate high and relative market share low, questions mark. Market growth rate low and relative market share high, that is cash cows. And market growth rate low and relative market share low is called dogs. So stars, first of all, a stars position. A star represents business units having large market shares in a fast growing industry. They may generate cash, but because of fast growing market, stars require huge investment to maintain their lead. Net cash flow is usually modest. SBUs located in this cell are attractive as they are located in the robust industry, and these business units are highly competitive in the industry. If successful, a star will become a cash cow when the industry matures. So cash cow represent business units having a large market share in a mature, slow growing industry. Cash cow require little investment and generate cash that can be utilized for investment. In other business units, these SBUs are the corporation's key source of cash and especially the core businesses. They are the base of an organization.
These businesses usually follow a stability strategy when cash cow lose their appeal and move towards deterioration. Then a retrenchment policy may be pursued. So question marks represent business units having low relative market share and located in a high growth industry. They require huge amount of cash to maintain or gain market share. They require attention to determine if the venture can be viable. So question marks are generally new goods and services which have a good commercial perspective. There is no specific strategy which can be adopted if the firm thinks it has dominant market share, then it can adopt expansion strategy, else retracement strategy can be adopted. Most businesses start as question marks as the company tries to enter a high growth market in which there is already a market share. If ignored, then question marks may become dogs, while if huge investment is made, then they have potential of becoming stars. So dogs represent businesses having weak market shares in low growth market. They neither generate cash nor require a huge amount of cash due to low market share. These business units face cost disadvantage. Generally, retrenchment strategies are adopted because this firm can get market share only at the expense of competitors' rival firms. Limitation of BCG matrix. The BCG matrix produces a framework for allocating resources among different business units and makes it possible to compare many business units at a glance. But BCG matrix is not free from limitations such as first, BCG matrix classifies business as low and high. But generally businesses can be medium also, thus the true nature of business may not be reflected. Market is not clearly defined in this model. High market share does not always leads to high profits. There are high costs also involved with high market share. Growth rate and relative market share are not the only indicator of profitability. This model ignores and overlooks other indicators of profitability. At times, dogs may help other businesses in gaining competitive advantage. They can earn even more than cash cows sometimes. So this four-shield approach is considered as to be too simplistic. So General Electric planning model. So the General Electric planning model considers business strength and industry attractiveness as criteria for categorizing businesses. This model uses a 3 into 3 matrix for classifying businesses in terms of categories such as winner, question marks, average businesses, profits, producers, and losers. So you can see on the screen General Electric planning model, McKinsey matrix with brief instruction. Protect position, level high and strong. A strength of बिजनेस यूनिट आपका स्ट्रॉन्ग है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है तो वहां पे प्रोटेक्ट पोजीशन होगा. इन्वेस्ट टू ग्रो एट मैक्सिमम रेट पॉसिबल. फोकस ऑन मेंटेनिंग अ स्ट्रेंथ. सेकेंड पोजीशन आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीडियम है और स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस यूनिट आपका स्ट्रॉन्ग है तो इन्वेस्ट इन मोस्ट अट्रैक्टिव segments, build up ability to counter competition, emphasize profitability by increased productivity. So medium high, high low, high strong, according to industry attractiveness and strength of business units. So next model is Potter's 5 forces model. It is very important model for a business concern. Potter's 5 forces model.
Porter's five forces is a model that identifies and analyzes five competitive forces that shape every industry and helps determine an industry's weaknesses and strengths. Five forces analysis is frequently used to identify an industry's structure to determine corporate strategy. Porter's model can be applied to any segment of the economy to understand the level of competition within the industry and enhance a company's long-term profitability. The five forces model is named after Harvard Business School professor Michel E. Porter. So, five forces models are first is competition in the industry, potential of new entrants into the industry, power of suppliers, power of customers, threat of substitute products. सो इंडस्ट्री के अंदर अगर कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं तो वो भी आपके लिए एक फोर्स का काम करता है, एक थ्रेट का काम करता है। तो एक फोर्स वो भी है कि इंडस्ट्री में जो कंपटीशन बढ़ रही है उससे आपको सेव करना है। सेकेंड है पोटेंशियल ऑफ न्यू इंटरेस्ट इनटू इंडस्ट्री। ये भी एक डर थ्रेट्स पैदा करता है आपके बिजनेस के अंदर। कोई भी न्यू इंट्रेंट्स जब होता है, जब कोई भी न्यू एंट्री करती है बिजनेस, तो बहुत ही एनर्जेटिक लेवल से वो एंट्री करती है। आते के साथ ही प्राइस काफी कम रखेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी अच्छी रखेगी और मैक्सिमम वो कस्टमर टारगेट करता है, मैक्सिमम कस्टमर को वो अपने अंदर लेना चाहता है, उसके शेयर को बढ़ाना चाहता है। तो उस समय जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको ध्यान में रखना होगा कि जो न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट में उनका क्या रेट है, उनका प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उनकी स्ट्रेटजी कैसी है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। थर्ड वन इज पावर ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर्स भी जो होते हैं अपने तरीके से आपके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लॉन्च कर देते हैं। लाइक अगर आप छोटे बिजनेस हैं तो आपको सप्लायर्स उतना आपको डिस्काउंट नहीं देगा जितना कि एक लार्ज स्केल वाले बिजनेस को देगा। तो सप्लायर्स भी अलग अलग बिजनेस को अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है, अलग अलग डिस्काउंट ऑफर करता है, जिसके कारण अगर जो छोटे बिजनेसमैन है उनको सप्लायर अगर महंगा प्रोडक्ट देगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफी बढ़ जाएगा। तो छोटे बिजनेसमैन के लिए मार्केट में सर्वाइवल कैपेसिटी कम हो जाती है रादर बिग बिजनेसेस। सो पावर ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स भी आते हैं और आपसे बार्गेनिंग करते हैं। तो बार्गेनिंग पावर जो कस्टमर का है वो भी आपके लिए एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जो बड़े बिजनेस होते हैं, जो ह्यूज बिजनेस होते हैं, वो रेट काफी चीप रखते हैं, लेकिन आप जो छोटे बिजनेस होते हैं उनका रेट हाई होता है, तो वहां पे बार्गेनिंग ऑब्वियसली चालू हो जाता है। सो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मींस जिसको इजी वे में आप रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक चाय की जगह पे कॉफी। तो अगर टी का रेट काफी हाई हो जाए तो लोग कॉफी की तरफ मूव करने लगेंगे। तो आपको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से भी मतलब ध्यान में रखना है, उसको भी ध्यान में रख के काम करना है कि हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या रेट है, कैसा चल रहा है मार्केट। नहीं तो आपके मेन प्रोडक्ट से लोग किधर मूव कर जाएंगे, सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव कर जाएंगे। So Porter's five forces model, Porter's five forces is a framework for analyzing a company's competitive environment. Porter five forces is a frequently used guideline for evaluating the competitive forces that influence variety of business sector. It was created by Harvard Business School professor Michel E. Porter in 1979 and has since become an important tool for managers. These forces include the number and power of a company's competitive rivals, potential new market entrants, suppliers, customers, and market entrants, substitute products that influence a company's profitability. So, five forces analysis can be used to guide business strategy to increase competitive advantage. So, you can see on the screen five forces model figure.
First is bargaining power of customer, bargaining power of supplier. Second, third one is threat of new entrant, and fourth one is threat of substitute product. And lastly, competitive rivalry within an industry. So next topic is strategy and management control interface. There is a close interface between a strategy and management control. The interface is indicated by the concept of interactive control formulated by Siemens 1995. A control system is essentially a strategy implementation tools when viewed from the perspective of strategy and control systems are coupled with each other. The information generated from the control system is useful in formulating newer strategies and for mid-course correction in existing strategy. When a control system generates meaningful and useful information for thinking about newer strategy, such as control system is referred to as interactive control. The information from such a control system has a learning value for the managers and the organization as a whole. So radical performance improvement and management control. The idea of radical performance improvement has been suggested by Sumatra Ghoshal et al. In their book, Managing Radical Changes. They consider managerial function as learning to cook sweet and sour. For achieving radical performance improvements, managers should effectively manage the sure task of improving resources productivity and the sweet task of creating and exploiting new opportunities. In a way, this approach is similar to Siemens interactive controls, whereas strategy and control system are coupled with to general synergy. While control system could represent the sure side, the strategy represents the sweet side as it involves looking for opportunities. So now these units are completed. So thanks for watching, and I will discuss next unit